Assalamualaikum dear students of class 12th. Hope you are fine. In class, today's lesson will be discussing para 3 from para 3 page 15 of the text Flamingo. As you know, we are reading a lesson titled Lost Spring, written by Anis Jung. Now let us start. From para 3, page 15. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. Sahib says, his eyes lighting up. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. For the children, it is rapid in wonder. For the elders, it is a means of survival. Dear students, in this para, writer says that Sahib is a main character. Writer says that Sahib was happy to say that sometimes he found a rupee and even a 10 rupee note in the garbage, as one often finds even a silver coin in the garbage dump. He kept on searching, hoping to find more and more. That says, for the children, the garbage dump was a means of fulfilling their dreams, although partially, while for their parents it was a means of aiding survival by providing the basis, that is food, clothing and shelter. Writer यहाँ पे कहता है I sometimes find a rupee, even a 10 rupee. साहिब से साहिब यहाँ पे जो करेक्टर है ये कहता है वो Sahib is a rag picker. He is one among the others boys who are rag pickers, and he is a main character of among all these rag pickers. साहिब कहता है I sometimes find a rupee, कभी कभार मैं इस गार्बेज से 1 रुपया हासिल करता हूँ और कभी कभार 10 रुपये हासिल करता हूँ, कोई 10 रुपये का नोट हासिल करता हूँ. और उसकी जो ये कहते हुए उसकी जो आइज़ हैं दे आर लाइटिंग अप, यानी वो खुशी की कैफियत उसमें बेदार होती है, खुशी की कैफियत उसकी आंखों में पैदा होती है, साहिब की आंखों में, ये कहते हुए कि कभी मैं 1 रुपया हासिल करता हूँ, कभी मैं 10 रुपये हासिल करता हूँ. when you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging. जब आप किसी गार्बेज से एक कॉइन हासिल करेंगे और वो भी चांदी की, उनके लिए तो वो 1 रुपया जो है दैट इज़ जस्ट लाइक ए कॉइन ऑफ दिस सिल्वर. यू डोंट स्टॉप स्क्रॉन्जिंग, और आप फिर उसमें ये जो ऑब्टेन मोर एंड मोर टू गेट मोर एंड मोर फ्रॉम दिस गार्बेज, आप नहीं रुक सकते हैं जब आपने एक हासिल की. राइट कहता है कि इसी तरह साहिब का आंसर भी ये है, और साहिब का ये उसका इस राइटर ने इसके जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे यही अंदाज़ा किया कि साहिब ने जब 1 रुपया हासिल किया, फॉर हिम फॉर साहिब एंड फॉर द अदर these children, this 1 rupee is just like a coin. It is a coin of this silver coin. This 1 rupee coin it values just like as a silver coin for them. You don't stop scrounging. और यहाँ पे राइटर कहता है कि आप नहीं रुक सकते हैं, जब आपने एक कॉइन हासिल की तो आप दूसरे के लिए ढूंढेंगे, उसके लिए आप सर्च करेंगे. सो देर इज़ होप फॉर फाइंडिंग अनदर मोर, और वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे होप होती है कि अब दूसरी कॉइन मुझे मिल सकती है. इट सीम्स फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट व्हाट इट मीन्स फॉर देयर पेरेंट्स के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए ये गार्बेज जो है इट्स मीनिंग इज़ डिफरेंट बट फॉर दिस चिल्ड्रन दिस गार्बेज हैज़ डिफरेंट मीनिंग अदर देन देयर पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स के लिए एक मीनिंग है और उनके लिए दूसरी मीनिंग है. फॉर चिल्ड्रन इट इज़ रैपिड इन वंडर,
इनके लिए तो ये है, इट इज़ वंडर, एक अजीब सा चीज़ है, विच इज़ जो रैपिड, जो लपेटा हुआ है। तो उस ढूंढने से उनको ये मिलता है, खुशी महसूस होती है। और जिस तरह राइटर ने कहा कि इवन हिज आइस लाइटिंग अप, दैट मीन्स उनकी जो आंखें हैं वो खुशी की खेपत उसमें पैदा होती है, बेदार होती है। सो ये यहाँ पे जो राइटर कहता है कि वो कहता है कि फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैपिड इन वंडर, ये लपेटा हुआ है, इसमें एक वंडर है, इसमें एक अजीब सी कैफत है। फॉर द एल्डर्स इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, लेकिन उनके जो बड़े हैं उनके लिए ज़िंदा रहने का एक ज़रिया है। सो दिस गार्बेज इट्स मीनिंग इज़ डिफरेंट। हम इसके लिए हमारे लिए इसकी मीनिंग डिफरेंट है। ये गंदगी है, ये गंदगी का एक ढेर है, लेकिन फॉर दिस चिल्ड्रन it is a hidden wonder for them. It's a rapid wonder for them. For the children, it is, for the elders, it is a means of survival. So, next para. On winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white, playing tennis. I like the game. I like the game. He hums, content to watch it standing behind the fence. I go inside. I go I go inside when no one is around. He admits. When no one is around. He admits. The gatekeeper lets me use the swing. The gatekeeper lets me use the swing. So राइटर यहाँ पे कहता है कि इसमें एक वर्ड है जिसकी मीनिंग कंटेंट मीन्स सेटिस्फाइड, कंटेंट मीन्स सेटिस्फाइड। हियर इज इन दिस पैरा वन वर्ड इज दैट इज कंटेंट, कंटेंट मीन्स सेटिस्फाइड। सो राइटर यहाँ पे कहता है one winter morning the writer saw Sahib standing by the fence of a club. On one morning, and it was winter, the writer saw Sahib standing by the fence of a club. He was watching a tennis game. He was watching actually a tennis game being played by the two young men. Sahib liked the game but could not play. He told the writer that he went inside the club when it would be closed. He was allowed to take swings by the god there. यहाँ पे राइटर कहता है कि one morning, I see Sahib standing by the fence gate of the neighborhood. मैंने क्या देखा? मैंने साहिब को देखा, वो खड़ा था by the fence of a club. यानी fence means it is actually surrounded by posts or barbed wire. इस एक साइड में बैठा है, फेंसिंग के इस साइड में बैठा है जो गेट के साथ था। नेबरहुड क्लब, और वहीं नज़दीकी एक क्लब था वहाँ पे। तो ही वॉज वॉचिंग टेंस। वट ही वॉज डूइंग देयर? वॉचिंग टू यंग मैन watching two young men dressed in white. उनका ड्रेस जो था, दो यंग मैन वहाँ पे खेल रहे थे। they were playing tennis, और उनकी जो वर्दी थी वो वाइट थी, वो they were dressed in white. so I like the game. वो साहिब ने कहा कि मैं इस गेम को पसंद करता हूँ, मैं भी चाहता था कि मैं इस गेम को खेलूँ, वहाँ पे जाऊँ, लेकिन मैं आई एम फ्रॉम द पोर फैमिली। सो मैं इस गेम को पसंद कर रहा था कि मैं भी वहाँ जाऊँ, मैं इनके साथ खेलूँ। ही हम्स, content to watch it standing behind the fence, but he was confident as he was watching behind the fence. I go. He hums. वो अपने इन बंद होंठों से गुनगुनाता था कि मैं भी खेलूँ। He was वो indifferent sounds अपने उन होंठों से निकालता था। Hums means it is indifferent sound, अपने इन बंद होंठों से वो गुनगुनाता था। So he was content, वो confident था, but he was confident and he was watching the game behind the fence.
सो राइटर यहाँ पे कहते हैं आई गो इनसाइड, मैं अंदर जाता था, मैं अंदर गया, बट नो वन वॉज व्हेन नो वन इज वॉज अराउंड, जब वहाँ पे कोई नहीं था तो मैं इस फेंस के अंदर चला गया, गेट के अंदर चला गया, लेकिन वहाँ पे उस वक्त कोई नहीं था। ही एडमिट्स, उसने ये एडमिट किया। द गेट कीपर लेट्स मी द यूज़ द सिंक, गेट कीपर ने मुझे क्या किया, उसने मुझे अंदर जाने दिया और उसने मुझे ये ये जो स्विंग है यानी झूला जो है, उसने मैं वो जो इस्तेमाल करने दिया। सो यहाँ पे राइटर कहता है कि इस गेट कीपर ने इसने मुझे एलो किया कि आप इसके अंदर आ जाओ, और मैंने झूला जो वहाँ पे है उसका इस्तेमाल किया, और दैट वाज एनफ फॉर मी। नाउ नेक्स्ट पैरा इज साहिब टू इज, this is next para. Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. Sometimes gave them to me, he says in the manner of an explanation. The fact that they are discarded shoes. Huh. Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother me. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole in it is a dream come true. But the game he is watching intently is out of his reach. Now writer says, इस पैरा में दो तीन वर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल डिस्कार्डेड है एक वर्ड यहाँ पे, डिस्कार्डेड मीन्स थ्रोन अवे। Another word is that is bother means worry. Writer, let me explain this para. Writer says that Sahib was also wearing tennis shoes. उसके पास एक shoes था. He was also wearing this tennis shoes. Did not look appropriate. Writer says that these shoes they do not look appropriate with his dress, which was worn out and had faded. He told the writer in an attempt to justify himself that someone gave him the shoes. He told the writer in an attempt to justify himself that someone gave him the shoes. She, however, figured out that he had got them from a garbage dump. Right? But this Sahib, he actually figured out that he had got them out from a garbage dump. They must have been thrown away by a boy from a rich family, as he did not want to wear them anymore. Probably, writer says, probably they had a hole or two in them. Actually, this is the explanation given by Sahib. So probably they had a hole or two in them, due to which he did not want to wear them. On the contrary, Sahib was not bothered by this fact, and had no problem wearing them, as he could not afford anything better than that. He walked barefoot, and to wear a shoe, even with a hole, which was like a dream for him. Although due to the garbage dump, Sahib's dream of wearing shoes had been partially filled, but his desire to play tennis would never be fulfilled. Writer says, यहाँ पे कहता है कि साहिब टू इज़ वेयरिंग द टेंस शूज़. साहिब वो टेंस शूज़ का इस्तेमाल करता है, उसके पास भी टेंस शूज़ का जोड़ा है. दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, बट दैट लुक समवट डिफरेंट. दैट इज स्ट्रेंज ओवर द डिस्कलर्ड, जो उसकी शर्ट है, शॉर्ट्स है उसके जो वो पहनता है, दैट इज़ दे आर ऑफ डिफरेंट कलर. सो that looks strange over his discolored shirt and shorts. उस शर्ट उसकी एक रंग की है, उसका एक शॉर्ट, उसका जो शॉर्ट जो पहनता है, दैट इज़ समवट ऑफ डिफरेंट कलर.
ये स्ट्रेंज सा लगता है. समवन गेव देम टू मी, ही सेज. उसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि मुझे किसी ने दिए हैं ये जूते, मुझे मेरे अपने नहीं हैं. ही सेज इन मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वो बेचारा एक्सप्लेन करता है मैंने जूते कहाँ से लाए. और फैक्ट तो ये है दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़. फैक्ट तो ये किसी ने फेंके हुए हैं. दे हैव बीन थ्रोन अवे, दे हैव बीन थ्रोन अवे बाय समवन फॉर सम बाय ऑफ सम रिच बॉय. किसी अमीर लड़के ने वो फेंके हैं गार्बेज पे और वहाँ से उठा के ढूंढ के इसमें लाए हैं. हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम, अब उसने वो रिफ्यूज़ किया है कि मैं इसको नहीं पहनूंगा, ये ख़राब हो चुके. बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, वहाँ पे एक होल था, यानी एक फटा हुआ एक जगह था और उसके सुराख एक जगह था. डज नॉट बॉदर देम, उसके लिए ये बॉदर नहीं है कि ये इसका होल है, इसका इसका एक सुराख है. फॉर साहब इट वाज नॉट ए मैटर, इट वाज नॉट मैटर ऑफ दिस रेस्पेक्ट. उसके लिए ये नहीं था. इट वाज नॉट बॉदर फॉर हिम, उसके लिए ये बॉदर नहीं. ये राइटर यहाँ पे कहता है कि उसके ही वाज नॉट बॉदरिंग फॉर, ही वाज नॉट वरी अबाउट दैट. सो फॉर वन हु हैज़ वॉकड बोर फुट, उसके लिए ये बॉदर नहीं है. उसके लिए दिस इज़ नॉट ए वरी कि जो बेयर फुट चलता हो, जो नंगे पाँव चलता हो, उसके लिए क्या है ये प्रॉब्लम कि उसका एक सुराख है. उसके लिए दिस इज़ ब्यूटीफुल शू फॉर हिम. दैट he says that this is for me to have one hole in, and to have one hole or two in these shoes, it does not matter, does not bother, she does not bother it. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. ये शूज़ जो इसके लिए है, जैसे एक ख्वाब इसके लिए ताबीर, शर्मत ताबीर हो गया. विद होल इन ए इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, बट द गेम ही इज़ वॉचिंग इंटेंटली इज़ आउट ऑफ रीच. लेकिन वो गेम जो है जिसके लिए वो जिसका वो वॉच कर रहा था, इज़ इंटेंटली आउट ऑफ रीच. इट इज़ वेरी he is very eager to watch it. He was watching it with interest. He's intently, that means he was watching it with interest, but it is out of reach for him, right? So आज इतना ही. आपका बहुत बहुत शुक्रिया.